Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Education. So today we will discuss next exercise, exercise 10th H of the chapters vector. So here the topic of this exercise is cross product. In 10C exercise ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ students that in that exercise we have already done in dot product and here we are doing cross product of two vectors. So cross product किस तरह करते हैं, it is denoted by, let us take first vector be A and second vector be B vector. The cross product of vectors denoted by A vector cross B product B vector. ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, i ਡਾਟ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1। ਸੋ i ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ that will be 0 ਜੇ i ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ i ਡਾਟ k will be 0। ਸੇਮ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ i cap, here is j cap and here is k cap। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, i तो j, j तो k, k तो i। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ i ਕ੍ਰਾਸ i ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। i ਕ੍ਰਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, i ਡਾਟ i 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ i ਕ੍ਰਾਸ i ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। i ਕ੍ਰਾਸ j ਕੀ ਹੈ, ਜੇ i ਤੋਂ j ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, i ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ j ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ then it will be k। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। i ਕ੍ਰਾਸ j ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ k। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ j ਕ੍ਰਾਸ i opposite ਹੋ ਗਿਆ, j ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, i ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, that it will be minus of k। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलना वर्ड सीरीज वाइज है बचे i तो j, j तो k। सो हियर i क्रॉस j विल बी k, जे j क्रॉस i थे आगे इट विल बी माइनस k। ठीक है जी। जे j क्रॉस k करना है, j क्रॉस की आ जाएगा थोड़े को k i, यही k क्रॉस j है था माइनस i। सो लेट अस स्टार्ट अवर टेबल। टेबल तो देखो हियर इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्रॉस प्रोडक्ट है। here i j k, here it will be same i j k। so, i cross i 0, j cross j 0, k cross j, k cross k is 0। i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j की है k, i क्रॉस k नहीं। अपना सर्कल है देखो एंटी क्लॉकवाइज चलता सी, i तो j वाल, j तो k वाल। ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज चलता सी i तो j वाल। सो हियर k तो i वाल चलता, देन आप k टू i वाल करते था, आप कह देंगे j वेक्टर आना सी, j कैप। ठीक है जी। i तो k वाल चल रहा है, दैट मींस माइनस j। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो j, j तो अगे की आंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ k। ठीक है जी। j तो बाद की आंदा है k, k तो बाद i। सो j क्रॉस i की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माइनस k। क्यों कि j क्रॉस i क्रॉस j है वो k आना सी। ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ i j k सीरीज बना लो, i तो बाद j आना, j तो बाद k आना। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ i तो बाद j आ रहा है then it will be k, जे j तो बाद k आ रहा है then it will be i। जे उल्टा आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फिर वो माइनस आ जाएगा ना। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ i to i क्रॉस i ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, i क्रॉस j, i तो बाद की आंदा j, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ k। नेक्स्ट i क्रॉस k, i तो बाद की आंदा j आंदा है, मतलब j तो बाद की आंदा k तो बाद आंदा है, दैट मींस वो की बन गया माइनस j। जे सीरीज ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ j cross i is -k, j cross j is 0, j cross k, j ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ k, that means ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ i। ਨੈਕਸਟ k cross i, k ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ i, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ j, k cross j, k ਤੋਂ ਬਾਅਦ i ਆਉਂਦਾ, that means ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -i। ठीक है जी जी एवं नहीं याद रहता रजे, टेबल नहीं याद रहता, बस एज इट इज याद रखो भी आई तो बाद की आंदा जे, जेड़ा ओपोजिट है एज इट इज इथे देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ आई जे के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के की है, दैट विल बी जीरोस। ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जीरोस ही है, ठीक है सेम वाला। हम आई क्रॉस जे, आई ते जे, जे तो बाद की आंदा के and it becomes, so here if j cross i is -k, next देखो j cross k, that will be i, j तो बाद की अंदर k, then the i हो गया जी, यही k cross j हो गया, then it will be -i। ठीक है जी, so I cross k, I cross k is -j and same k cross I is positive। So this is our cross product। So let us take the example of cross product। cross product करनी किस तरह है, let us take a vector will be 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and b vector will be I cap plus j cap minus k cap। So a cross b is equals to, इन सॉल्व किस तरह कर दिए क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ, इट्स लाइक अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस तरह कर दिस, देखो फर्स्ट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, फर्स्ट रो ਤੁਹਾਡੀ ਬਣेगी I j k always and second row will be the coefficients of I j k of a vector 2 -3 4 and b vector de 1 1 -1। this is your determinant। हमेशा की करना है, I repeat, फर्स्ट रो थोड़ी I j k ही बनेगी, सेकंड रो की बनेगी जेडे दो, सेकंड और थर्ड रो विल बी जेडे तुसी दो वेक्टर्स दी प्रोडक्ट करनी है, इट विल बी डिफरेंट। देखो जे तुसी a क्रॉस b करना है दैन a वेक्टर ही ऊपर आना चाहिए सेकंड रो ते एंड b वेक्टर विल बी ऑन थर्ड रो। जे तुसी b क्रॉस a कर रहे हो फिर b वेक्टर नु ऊपर लेके आऊंगी, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट किस तरह, क्रॉस किस तरह करना है रजे, उसी तरह जिस तरह डिटरमिनेंट करदे सी, साइंस केड़े लेंदे सी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो I as it is, this row and this column left, the remaining determinant is -3 4 1 -1, ठीक है जी। नेक्स्ट माइनस जे, दिस रो एंड दिस कॉलम लेफ्ट, द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज 2 1 4 -1 प्लस k cap, this row and this column left, the remaining determinant 2 -3 and 1 1। so I cap as it is, solving this, -3 into -1 is 3 -4 minus j cap as it is, this into this, -2 -4 plus k cap as it is, 2 minus plus 3। so 3 minus 4 is -i cap, -2 -4, this is -6 plus 6 j cap plus 5 k cap। this is your cross product। I repeat the process। देखो जिस तरह तुसी डिटरमिनेंट्स करदे सी उसी तरह करना है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रजे ਆਪਾਂ साइंस याद रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट रो विल बी I cap j cap k cap and the second and third row will be your both vectors जिन्हां दी तुसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आंदा अपने कोल आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट we are having area of parallelogram। जो भी फॉर्मूलाज आप इस एक्सरसाइज से यूज करेंगे, आई राइट डाउन हियर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। व्हेन साइड्स आर गिवन,
ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾइड्स गिवन ਹੋਣਗੀਆਂ साइड्स आर गिवन सेकंड इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to 1 by 2 magnitude of a vector cross b vector when diagonals are given ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ diagonal given ਹੋਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ 1 by 2 ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ 10c ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਹੇਅਰ when diagonals are given next formula is area of triangle ਦੇ ਵੀ ਦੋ formulas ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sides given ਹੈ then it will be 1 by 2 into magnitude of a vector cross b vector this same as area of parallelogram when sides are given next is ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ vertices given है so area of triangle is equals to 1 by 2 AB vector cross BC vector AB vector cross AC vector magnitude divided by 2 here when the vertices are given जब ਤੁਹਾਨੂੰ A B C vertices given है ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ AB vector ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ AB ਵੈਕਟਰ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ AC ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ sin θ = a vector cross b vector magnitude divided by a vector magnitude and b vector magnitude difference ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ cos θ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ sin θ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ क्वेश्चन नंबर 1 find a cross b find a vector cross b vector if a vector is equals to minus I cap plus 3k cap and b vector is equals to I cap plus 3j cap minus 2k cap. So here we have to find A cross B. Solution is A vector cross B vector is equals to, firstly write down first row I cap, J cap, K cap. The second row is your A vector. Here the coefficient of I is -1. The coefficient of J is missing, that will be 0. And the coefficient of K is 3. So in B vector the coefficient of I is 1, coefficient of J is 3 and coefficient of K is -2. Now I as it is plus minus plus, we are taking the signs. So I vector I cap as it is, first row and first column left, the remaining determinant is 0, 3, 3 minus 2 minus J as it is. The remaining determinant is this row and this column left, -1, 1, 3, -2 plus K cap as it is. This row and this column left, the remaining determinant is -1, 1, 0, 3. So answer will be 0 into -2 is 0, -9 minus J cap as it is, this is 2 minus 3 plus K cap as it is, this is -3 minus 0. So 0 minus 9 is -9 I cap, minus J minus minus हो गया plus J cap minus 3 K cap. This is your answer of A vector cross B vector. Now let us start the second question. Write the value of
I dot, first part is I dot j cross k plus j dot k cross I plus k dot I, sorry, j cross I. So here solving this, देखो सर्कल की सी अपना I तो कितने चलता है J वाल, J तो कितने जाना है K वाल, ठीक है जी. So here I dot as it is, so J cross K is I plus J cap as it is, K cross I is J plus K as it is J cross I is J cross I देखो जी J cross I जी I cross J ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ K, ठीक है. I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ J, ਹੁਣ J ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਆ ਰਿਹਾ, that means ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ minus K. So this implies ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ I into I is 1, J into J is 1 and K into minus K is minus 1. देखो K into K is 1 plus minus K हो गया minus. So this becomes 2 minus 1, answer will be 1. I repeat the process. So J cross I, देखो J तो बाद की आंदा तो J cross K, J तो बाद की आंदा K, जेकर J तो बाद K आ रहा है then it will be I. थर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੈਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ I J K ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ K cross I, K cross I, I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ so J, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ J cross I, J cross I opposite देता, डायरेक्शन अपनी की जा रही सी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ J, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ J cross I, that means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ minus K ਆ ਗਿਆ. So I dot I ਆਪਾਂ already ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं 1 है, J dot J 1 है, here K dot K is also 1, plus minus is minus, so 2 minus 1 is 1. This is your answer. So next question, next part of this question is find the value of P. Find P if given here देखो 2I plus 6J, 2I cap plus 6J cap plus 27K cap cross I plus 3J plus I cap plus 3J cap plus PK cap is equals to 0. कोई की है बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ I J K. द फर्स्ट वेक्टर इज मतलब फर्स्ट रो की बन गई तो 2 6 27, the second row will be 1 3 P is equals to 0. So solving this determinant, I am solving directly 6P minus 27 into 3 is 81 minus J cap as it is this row and this column left. The remaining determinant after solving we have 2P minus 27 plus K cap as it is 6 minus 6 is equals to 0. Now I cap as it is we have 6P minus 81 minus J cap as it is 2P minus 27 is equals to 6 minus 6 is 0, then it will be 0. So from first bracket taking common 3 outside, so 3 I cap inside it becomes 2P minus 27 minus J cap. 2P minus 27 is equals to 0. So here this is 3I minus J, bracket अलग कर लो, अंदर वाली bracket तो देखो सेम है बच्चे 2P minus 27, 2P minus 27. So when two brackets की product जब तो देखो 0 आ जाती है, that means कि उनका जो एक bracket की है 0 है. Here since 3I minus J cap is not equals to 0, देखो आप ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती क्योंकि I cap J cap के इक्वल नहीं हो सकता.
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, this implies you can say 2p is equals to 27, this implies p is equals to 27 upon 2. This is your answer. So let us start our next question. Next question is, if A vector is equals to 2i cap, find, question number 3rd, find A vector cross B vector magnitude. If A vector is equals to 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus j cap plus 3k cap, and B vector is equals to 3i cap plus 5j cap minus 2k cap. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप की फाइंड करेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. So A vector cross B vector is equals to I cap plus j cap plus I cap, j cap, k cap, first row, and second row becomes I the coefficient in A vector 2, j the coefficient 1, k the coefficient 3. So in B vector I coefficient will be 3 and j coefficient is 5 and k coefficient is minus 2. So here it becomes I cap as it is. I'm solving here directly determinant. So minus 2 minus 15 minus j cap is minus 4 minus 9 plus k cap is 10 minus 3. So here it becomes minus 15 minus 2 is minus 17 I cap, minus 4 minus 9 is minus 13 j cap plus 13. So my in bracket it will be minus 13 and minus minus is positive. So positive 13 j cap plus 7 k cap. Now magnitude of A vector cross B vector is equals to under the root of I the coefficient the square. So minus 17 square and plus 13 square plus 7 square is equals to minus 17 square. So negative the square cube, the positive 17 square is 289. Plus 13 square is 169 plus 7 square is 49 and it will becomes 507. This is your answer. Now let us start our next question. Find the unit vector perpendicular to both vectors. Find the unit vector perpendicular to both given vectors. So first of all दो vectors given है अपन A vector and B vector. So A vector is equals to 3i cap minus 2j cap, 3i cap minus 2j cap plus k cap, and B vector is equals to I cap plus 4j cap minus k cap. So first of all आपका की फाइंड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, which is परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स. मतलब बोथ गिवन वेक्टर्स तो एक वेक्टर बनाते हैं, किस तरह बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके. सो A क्रॉस B is equals to I j k. First row is 3 minus 2 1, 3 minus 2 1. So here I am solving this directly. I cap as it is minus 2. Here is minus 1. Minus 2 into minus 1 is 2 minus 4 minus j cap as it is. So minus 3 minus 1 plus k cap 12 plus 2. It becomes minus 2 I cap minus 4 plus 4 j cap plus 14 k cap. Now unit vector is equals to
ऊपर वेक्टर नीचे होता मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर इज -2i कैप plus 4j cap plus 14k cap divided by magnitude is -2 square plus 4 square plus 14 square. It will be taking common 2 from numerator, -i cap plus 2j cap plus 7k cap divided by under the root of, it will be 4 plus 16 plus 196 plus this is equals to 2 as it is -i plus 2j plus 7k cap divided by under the root of 196 plus 4 is 200, so 216 the factors बना दो बच्चे। You can solving this by factors 216, 2108, 254, 227, 3933. So you can write down as it is 2 as it is -i cap plus 2j cap plus 7k cap divided by under the root of 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So from under root you can take in common 2 and 1 3. So it becomes 2 out numerator as it is -i cap plus 2j cap plus 7k cap divided by, you can write 2 into 3 and under the root of 6. So 2 cancel out, the remaining term will be your answer 1 by 3 root 6 -i cap plus 2j cap plus 7k cap. This is your unit vector. तो किसी भी क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर जो तुहानू फाइंड करने लई कहंदे आपां करदे की ऊपर वेक्टर नीचे दा मैग्नीट्यूड। सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is find the area of parallelogram whose adjacent sides are, की given है क्या adjacent sides given। देखो जो sides given सी अपना formula की सी area of parallelogram का is equals to magnitude of a vector cross b vector। जे तो हम diagonal given होंगे then तो सी की करना है divided by 2। So here a vector is equals to 2i cap plus j cap and b vector is equals to 3i cap plus j cap plus 4k cap। So cross product of a vector cross b vector is equals to I cap, j cap, k cap, 2, 1, 0. The coefficient of j will be 0 in a vector and b vector is 3, 1, 4. So a vector cross b vector is I cap as it is. This is 4 minus 0 plus minus j cap as it is. This is 4 2s are 8 minus 0 plus k cap as it is 2 minus 3. It will be 4 I cap minus 8 j cap minus k cap. So magnitude of a vector cross b vector is equals to under the root of 4 square minus plus minus of 8 square plus minus of 1 square, and it will be 4 square is 16 plus 64 plus 1. The answer will be under the root of 81. So area of parallelogram is equals to a vector cross b vector magnitude is equals to under the root of 81 is equals to 9 units. This is your answer. So let us start our next question.
Next question is find the area of triangle whose vertices are A vertices given है 2, 3, 5, 2, 3, 5 and B के vertices given अपन 3, 5, 8 and C के vertices है 2, 7, 8. 2, 7, 8. First of all की है solution area of triangle. The formula की सी उत्तर अपने को 1/2 magnitude of AB vector cross AC vector. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ vertices given है, so first of all we have to find AB vector. AB vector ਕਿਵੇਂ find ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ position vector of B minus position vector of A. so B ਦੇ corresponding A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ minus ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 3 minus 2 is 1 I cap. Next is plus 5 minus 3 is 2 j cap. Next is 8 minus 5 is 3 k cap. This is your AB vector. Next AC vector, position vector of C minus position vector of A. So C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A minus ਕਰਨਾ ਹੈ. So here it is 2. 2 minus 2 is 0 I cap. 7 minus 3 is 4 j cap. Next 8 minus 5 is 3 k cap. This is your AC vector. So area of triangle तो find करो तो पहला first of all अपन की find करांगे cross product of AB cross AC is equals to I cap, J cap, K cap and I the coefficients 1, 2, 3. J the coefficients, sorry, J the coefficient 2 and K the coefficient 3. And in AC vector it will be 0, 4 and 3. Now product is I cap as it is plus minus plus. I cap as it is, it will be 6 minus 12 minus J cap 3 minus 0 plus K cap 4 minus 0. Then it will be minus 6 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap minus 6 ठीक है जी minus 6 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. Now magnitude is magnitude of AB vector cross AC vector is equals to under the root of I the coefficient the square plus j the coefficient the square plus k the coefficient the square. So it will be minus 6 square is 36, negative the square positive हो गया. So plus 3 square is 9, 4 square is 16 and it will be 36 plus 16 plus 9 is 61 under the root of 61. Now area of triangle is equals to 1/2 magnitude of AB vector cross AC vector then 1/2 into under the root of 61 square units. This is your answer. So thank you students.